सर एक काम करो। हेलो, मैं ना अभी अंजलि वाले उसको चलाती हूँ, फिर उसको चला सकती हूँ आपसे बात, ठीक है? लिंक दे रही हूँ, आईडी चेंज कर दो दूसरा लिंक के लिए, ठीक है? हाँ, आप उस पर लॉगिन करो, अंजलि जो अंजलि जूम पे, अंजलि डॉट मैटिकस वाले पे लॉगिन करो। अंजलि डॉट बेरवाल हाँ हाँ, हो गया। मैं इस पे उनको 22 का लिंक बनाना पड़ेगा मुझे मीटिंग में। रुको 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 रुको, रुको मुझे यहाँ पे open कर- हाँ, उसी पे कर देते हैं हम। मैं इसकी आईडी ले लूँ, डिटेल्स आपको यहाँ से रन करनी पड़ेगी आज, क्योंकि मेरा सेशन चल रहा है दोनों लैपटॉप पे। आपने कर दी इसकी मुझे आईडी पासवर्ड? नहीं, मैं निकालती हूँ। ये भी मेरे को व्हाट्सएप में लेना है, पासपोर्ट मांगता ना ये शायद। मेरी सब बच्चों को भेजिए, आप लॉगिन कर लो। जब मुझे वीडियो भेजोगे ना तो उस पर लिख देना स्पेसिफिकली 68, कंफ्यूजन ना आ जाएगा। जब इसकी वीडियो मुझे भेजोगे ना तब मुझे इस पर लिख देना 68, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? हाँ। Good morning, everyone. How are you all doing? Good morning, Rizal. Good morning, Raman. Voice में क्या issue आ रहा है exactly बताओगे? Are you hearing some little bit of background noise or the voice is not clear itself? Good morning, Dino. Yeah, because it's very hot and it's just a fan noise. And if you are able to hear me properly, then I think उतना ठीक है, नहीं तो I will have to switch it off or try some other version of it. If it's too much, then अच्छा, रमन को कोई noise नहीं आने issue. Okay. So if it's too much, then I'll do the adjustments. If it's not too much and you're able to hear me properly, then तो ठीक है. अगर समझने में दिक्कत हो रही है, then let me know. I will do some adjustments there.
Okay. Good morning, Shivangi. So I hope everyone is doing good. We have to resume with Excel today, right? So we'll be starting with Excel. Any doubts, anybody till now? Yes, Raman. I will surely do that. Actually, मेरे को कल याद भी आया, but I got busy somewhere and then it slipped my mind. I'll do it today, definitely. Okay, rather I'll just do it so that I don't forget it again. Okay, so that is one thing, and another thing is that we have to start with the various functions and everything of Excel today, right? We did the basics, we did the groundwork for Excel, and now we'll be carrying it forward, working on it, and talking about a lot of functions. Hold on for one moment. So I've shared the file with you, Tata Elixir file on the group. Okay, and now we'll be working on Excel.
एक्सेल में हमने बहुत सारी चीजें कल बात की थी, बहुत सारे शॉर्टकट, बहुत सारे बेसिक्स हमने कल एक्सेल के कवर करे थे, राइट? अभी हमने क्या करना है, नेक्स्ट इज टू do a little bit of exercise on the cell referencing and freezing that we talked about in the yesterday's class. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर क्या छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी. We have an income statement to be prepared. Okay, so we already know what income statement is. We've talked about it. So a mini income statement, if we talk about it, will contain the sales. We'll subtract the cost to get the profit before tax. We'll subtract the tax to get the profit after tax. And this we want to do for the various years starting from 2021 till 2026. This is basically a projected income statement that we are developing. Voice is double. How's that possible? तो मैंने वो भी चेंज कर दिया. I'm using the same mic as yesterday. I think result there's some problem at your end. Please check. Please rejoin the meeting because मैंने अपना the fan which was causing the background noise, I've even switched that off. Although it's so hot, and I'm using the same mic as yesterday. So I have done my best from my side. You just check, do some adjustments at your end. Maybe there's some issue at your end. So we need to prepare this income statement. ठीक है? So यहाँ पर it's a very simple income statement, and these are projected statements that we are developing. Like what is going to be the numbers for 2021, 2022, 23, 24, and so on. Right? For that, how do we do the projections part? We definitely need some assumptions to do that. Right? We need assumptions to do that. Like what we are expecting the initial revenue to be, what tax rate are we expecting, what sales growth are we expecting, and what cost we are expecting for the upcoming 6 years, right? So let's have a simple example. Okay, first and foremost thing, let's have the starting sales to be, let's say, 10 lakh. Okay, so we are starting with the revenue of 10 lakh, and we are expecting this revenue to grow at 20% per annum, and the tax rate that we are expecting is 30%, and we are expecting that every year 40% will be expensed off, like whatever revenues that we generate, out of those revenues 40% is a cost part, and rest is the profit on which we pay tax of 30%, and whatever is left is the profit that belongs to us, that is profit after all the expenses including taxes. Okay, so that is the thing that we need to follow here. अभी ये वाली exercise, I think you can just type in and have it with you. बाकी में data है that I'll share with you. ठीक है, जहाँ पर data की बात आएगी वहाँ I'll share with you, but this is a very simple data which can be typed in by you. So अभी सबसे पहले I would request you all कि आप एक जो हम शीट पे काम कर रहे थे कल, आई होप आपने एक अलग से उसको सेव कर लिया होगा जहाँ पर हम बेसिक्स के बारे में बात करी थी, तो वहीं पर एक शीट और ऐड कर सकते हैं आप, और वहां पर यू कैन जस्ट क्रिएट दिस इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, एंड आई वांट यू गाइस टू क्रिएट इट बिकॉज ए अकाउंटिंग हम कर चुके हैं, बी सेल रेफरेंसिंग फ्रीजिंग यूज होना है इसमें, वो हम कर चुके हैं. सो एवरीथिंग वी हैव डन, right? This is an application of what we've already discussed, and a very simple one. Okay, so I want you guys to try it first.
before I give the solution to you. Otherwise, there is no point. अगर सारी solutions मैं ही आपको दे दूंगी तो आपको सोचने का, समझने का, ट्राई करने का opportunity नहीं मिला. So your mind will not be working. Your mind will be working only when you work. Not I give you the solution. I will give you the solution, but before that, your mind should also work, right? So try this thing out. Give it a couple of minutes or something like that. Try it out and just let me know. ट्राई हो गया, अपनी तरफ से कोशिश भी कर ली है, नहीं सॉल्व हो पाया, तब भी मेरे को बताओ कि ट्राई कर लिया, ठीक है? और सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है. देन ऑल्सो लेट मी नो, ठीक है? सो जस्ट गिव इट अ शॉट.
Are we through with this question? Have you tried or still onto it? Okay. Okay, great, Nazneen. Great, Raman. So I hope अभी तक हो गया होगा सबका. Let's discuss. ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी हम कुछ टाइप नहीं करेंगे. That is the one rule we need to remember always with respect to our financial statements or financial modeling for that matter. हमने ये डेटा अलग से लिखा ही इसलिए है so that we can just refer to these cells. You don't have to type things again and again. ठीक है ना? So sales for 2021 is basically 10 lakh, right? So what do? I type in equal to and I refer to this cell, right? I don't type 10 lakh. I just refer to this cell already containing my sales number of 10 lakh, right? That is one thing. Second thing is that I need to provide in the growth. So how do I define the growth in sales for the remaining years? कैसे किया growth? What formula did you use? Yes, absolutely. We can do this ways. Okay, so 2022 में हमारी sales क्या हो जाएगी? It is going to be the sales of 2021 multiplied by, in the bracket we can have 1 plus the sales growth, right? Now I will not be typing anything. Did I type anything? No, I didn't, right? Now the question is, can I carry this formula forward for the remaining years? Do I require to do something or I can carry it as it is? Do I need to do something or I can carry it forward as it is?
Yes, we need to freeze. We need to freeze this B16. Why B16? Because if I don't freeze B16, when I drag it forward, it is going to make it C16, then D16 and so on. And I don't want that because my information of 20% is present only in B16. So B16 must be freezed. ठीक है? B16 must be freezed. For which you get this number and then you drag it forward to get the future numbers. Right? Simple. कॉस्ट के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया आपने? We need to freeze this B16 cell. As discussed in the last class also, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर सेल में है, अपने को वो सेल को वही के वही फ्रीज करना पड़ता है. ठीक है, ताकि जब हम आगे ड्रैग करें, अब हमने इसको आगे ड्रैग किया तो व्हाट डिड एक्सेल डू? एक्सेल took the previous year sales multiplied by 1 plus B16 which is 20%. तो एक्सेल हर साल हमारी सेल्स तो चेंज कर रहा है, दैट इज प्रीवियस ईयर सेल्स में 20% ऐड कर रहा है, राइट? बट फॉर द रेफरेंस ऑफ दिस सेल B16 वो इट इज कीपिंग सेम. गेटिंग द पॉइंट बिनो? एंड यस एब्सोल्युटली रमन, कॉस्ट निकालने के लिए वी विल हैव इक्वल टू the percentage multiplied by the cost proportion that we have. So every year our cost is 40% of the sales. ठीक है? So it's 40% of the sales अगर हम कर देते हैं, we'll get the cost amount. Now again the question is, can I drag it forward or I need to freeze something before I do that? Yes, I need to freeze this cell again, B15. Why do I have to freeze it? Because this information is contained only in this particular cell. If the information is present only in one cell and not the subsequent cells, the information needs to be freezed, right? So I can now drag this forward. Okay, my profit before tax will be equivalent to my sales minus cost, right? I can drag this also forward. What about the income taxes? How do we get this income tax figure? What formula did you use? Yes, it is going to be the profit before tax into the tax percentage. So we'll have equal to, then we'll refer to the profit before tax, multiply it with the tax rate which is present in this cell. Should I freeze anything? Yes, B17 needs to be freezed, right? And then we drag it forward. This is the formula for profit before tax, Bino.
So this is our income tax figure, right? And profit after tax will be the profit before tax minus the income tax, right? Which is going to give us our profit after tax. So are we getting the same numbers as our profit after tax? Okay, great. So I hope numbers सबके same आ रहे हैं. So this is like one of the basic application which we can see of cell referencing and cell freezing. ठीक है? So I hope it is clear. हम हर जगह cell reference करेंगे and wherever required, जहाँ पर भी information is there only in a particular cell, we'll be freezing that cell so that its position does not get changed when we carry it forward. ठीक है? So that is about cell referencing and freezing. And today we'll be talking about a lot of functions, like sum related, all the functions we'll cover. We have if function related, a lot of functions are there which can be covered, right? And then some custom formatting and stuff like that. And then we have the VLOOKUP, HLOOKUP, index match and everything. Okay, so there are a lot of functions in line that we can discuss for today. Okay, but I think for that I will have to share this file with you because we need data to work upon to be able to use these functions. ठीक है, तो ये एक फाइल मैंने बनाई है containing some hypothetical data points, ठीक है, on which we can just work around the various functions that we need to cover. ठीक है, अच्छा, before this एक शीट है जहाँ पर no functions are required. ठीक है, ये वाली शीट सॉरी नो डेटा इज रिक्वायर्ड. तो एक ये वाली शीट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मे बी I'll share the file with you and we'll talk about the other functions which are going to be data oriented. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर the first thing that I would like to talk about is basically previous sheet, the sheet we were working upon. This is that sheet. Okay. So एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू we'll talk about a few stuff. ठीक है, let's say that there is a loan of some amount, maybe 5 lakh. ठीक है, and there is some interest rate attached to the loan, maybe 12%. ठीक है, अब ये 12% रेट पर annum है. I want that to be shown here. ठीक है, if the EMI is equal monthly installment, right? So if the EMI is 5,000, rough example. So if the EMI is 5,000, I want to show that this 5,000 is per month. I want to show the interest rate is per annum.
how can I do that? If I type per annum here or a simple p dot a to be precise, अगर हम यहाँ पर ये p dot a टाइप कर देते हैं, ठीक है, and then I have to calculate the interest amount, ठीक है, यहाँ पर अगर अपने को interest amount calculate करनी है, so for that I'll have to use the interest figure multiplied by the loan figure, right? And when I do, what do you expect to happen? Any guesses what is going to be the answer here? No guesses? 60k. Shan says 60k is going to be the answer. Well, I think the answer will be an error. Error आ जाएगा यहाँ पर. क्यों? क्योंकि Excel will get confused. Excel would be like कि ये P dot A क्या है? मैं 5 लाख को 12% से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट 5 लाख को ये 12% P dot A से कैसे मल्टीप्लाई करूँ? Right? So बेचारा Excel got confused. So what do you think can be the solution here? Any possible solution you can think about this? I want to show P dot A and I want the calculation also to be done at the same time. Is there any possibility of any solution here? Think about it. कोई solution आया दिमाग में किसी को? कोई जुगाड़ भी चलेगा. If I have to show this P dot A thing and I want to do the calculations also, that is 12% into 5 lakh, what are the possible things, possible solutions that we can utilize here? Anybody? Okay. Naming the cells से तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो नेम तो बैकएंड नेम होता है, वो अपेयर नहीं करेगा यहाँ पर, वो यहाँ अपेयर करेगा नेम बॉक्स में. कमेंट्स में यस दैट कैन बी डन, राइट. एक सॉल्यूशन आपने दिया कि यहाँ पर हम कमेंट ही इंसर्ट कर दे, यहाँ पर हम एक कमेंट इंसर्ट कर दे दैट दिस इंटरेस्ट रेट इज पर एनम. ठीक है, तो ये पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. What if I don't want to do that? एक ये जुगाड़ तो ठीक है, another जुगाड़ I tell you, ठीक है,
एक और जुगाड़ जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि इसके नेक्स्ट सेल पे लिख दिया पर annum. Instead of doing it in the same 12% cell, I did it in the next cell. But again, this is a जुगाड़. कमेंट ऐड कर लिया या नेक्स्ट सेल में आपने उस चीज को लिख दिया, तो इट्स जुगाड़ ओनली. तो जुगाड़ से भी ये काम किया जा सकता है. बट इफ आई टेल यू दैट देयर इज अ वे कि आप एग्जैक्टली इसको यहीं पर लिख सकते हो, यू कैन डू इट हियर इटसेल्फ. इसी सेल में आप p डॉट ए लिखोगे या कुछ भी लिखोगे और एक्सेल कैलकुलेशन फिर भी करेगा. कैसे? लेट्स सी. उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसकी फॉर्मेटिंग को कस्टमाइज करना पड़ेगा. ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट 1, एक सेकंड, शॉर्टकट दिमाग से स्किप हो रहा है शायद, लेकिन when you right click on it, any cell for that matter, you get so many options there, right? You get option to quick analysis, filter, or do a lot of stuff with it. एक ऑप्शन आपके पास फॉर्मेट सेल का भी होता है, इसका शॉर्टकट भी होता है, समथिंग कंट्रोल शिफ्ट 1 या 1 से कुछ रिलेटेड था, जो भी है एक बार देख के बता दूंगी मैं. लेट मी चेक ओनली, क्योंकि पहले तो मैं बहुत यूज करती थी तो याद भी गया था, बट रिसेंट टाइम्स में यूज नहीं किया है. कस्टम फॉर्मेटिंग शॉर्टकट इन एक्सेल, लेट मी जस्ट सर्च फॉर इट. बाद में देखती हूँ मैं मेरा. ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली वी कम टू दिस फॉर्मेट सेल्स फीचर, कंट्रोल शिफ्ट F. okay, let me try. Okay, so this is right, absolutely. कंट्रोल शिफ्ट, पता नहीं 1 किसका था फिर, आई डोंट नो. चलो ठीक है, the purpose is solved. We come to this format cell thing, और यहाँ पर we come to this custom thing. ठीक है, यहाँ पर हम बहुत सारे फॉर्मेट्स बेसिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं. जनरल है या नंबर है तो उसका डेसिमल प्लेसेस कितना डालना है, करेंसी है तो कौन सी करेंसी स्पेसिफाई करना है, काउंटिंग है, डेट है, टाइम है. देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन विद द डेट थिंग एज वेल. ठीक है, जो हम करेंगे. ठीक है, एंड परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक वैल्यूज. सो यहाँ पर अभी हम बात करें इस फीचर की, इस फॉर्मेट की, दैट इज कस्टम. अब कस्टम बेसिकली क्या करता है, कस्टमाइज्ड फॉर्मेटिंग हमारे लिए कर देता है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे. ठीक है, सो this is basically some format, like if it's a plain number we select this, if it's a number with 2 decimal we select this, if it's a percentage we select this. ठीक है, and once we do, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्पेस देके you can just type in p dot a. You selected the percentage thing, you gave a space, and then you type p dot a.
And as you can see sample में 12% P dot A appear कर रहा है. That means इस सेल की पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग में सिर्फ परसेंटेज नहीं रह गया. अब परसेंटेज के आगे we have P dot A or whatever we want to type. That has become part of the format of the cell. And then I press OK. And as I can see that this cell states 12% P dot A. Whereas if you look at the formula bar still says 12%. That means the value of this cell is 12%. It is just the format. Format में जैसे rupee, dollar, percentage इस तरीके से लिखा हुआ आता है. वैसे ही ये P dot A has become part of the format of the cell, not the value of the cell. Directly type कर रहे थे तो वो उसकी वैल्यू में ले रहा था, जिसकी वजह से when we were multiplying it with 5 lakh, interest figure आ नहीं रहा था. There was error there. Right? But यहाँ पे अब क्या हुआ है? यहाँ पर बेसिकली हमने उसको P dot A को फॉर्मेट में डाल दिया. वैल्यू हमारी नहीं चेंज करी है. वैल्यू इज 12% एंड देयरफॉर इंटरेस्ट फिगर भी हमारी कैलकुलेट हो गई. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वे टू ऐड एनीथिंग टू एनी सेल विदाउट चेंजिंग द वैल्यू बाय ट्वीकिंग द फॉर्मेट. कस्टम फॉर्मेटिंग इसे बोलते हैं. ठीक है. क्लियर है? आपका भी हुआ कस्टम फॉर्मेटिंग? ओके ग्रेट. तो ये तो है कस्टम फॉर्मेटिंग की थिंग, और ये भी बड़े बड़े काम आती है. बहुत सारी चीजें ऐसी होती है. ठीक है, हम जहाँ पर कमेंट नहीं ऐड करना चाहते लेकिन हम कुछ स्पेसिफाई भी करना चाहते हैं विच इज वेरी एविडेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, जैसे ये EMI में भी सेम चीज करी जा सकती है. वी कैन स्पेसिफाई पर मंथ थिंग हियर विदाउट डिस्टरप्टिंग द वैल्यू ऑफ 5000 फॉर दिस EMI. ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो. देखो अल्टीमेटली ये सब टूल्स है, ये सब फीचर्स है, एंड यू कैन यूज देम टू योर कंफर्ट wherever possible. Okay, Dipanshu. So Control Shift and F is the shortcut to open it. So go to number, in that go to custom, in that select this 0% and type in P dot A there. Here you need to type and you can see the result in the sample. Okay, Dipanshu? Okay, so 12% is not showing in my formula bar. What is it showing in the formula bar? I'll do that, Shivangi, don't worry. एक बार पहले दीपांशु का कंसर्न सॉल्व कर दें. So you must have typed in this P dot A in this cell itself. Have you done that? You have to remove that. यहाँ पर आपका सिर्फ 12% लिखा होना चाहिए, and then you open the format cells.
and then you do the steps. Getting the point? आपने पहले से ही p dot a लिख रखा होगा मोस्ट लाइकली, जिसकी वजह से आपके फॉर्मूले बार में जो p dot a दिखा रहा है. Okay, you can watch the recording again, Dipanshu, for that thing. ठीक है, I'm sure कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हो रहा होगा. You can watch for the recording. और एक डाउट आ रहा था इसमें, अगर p dot n हमें ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? So again we go to our custom format. We just leave 5000 there. ठीक है, I did not type per month anywhere. It is 5000. So go to custom and I do not use percentage here, 0% here, because the figure that is there is not in percentage, it's just an amount, right? So I'll use this 0 instead, not 0%. So I use 0, which is showing a sample of 5000. I give it a space and then type p dot m to signify per month thing. Why is it not showing? It is showing p dot, not m part. Why so? If I keep it general, तो वो और ही नहीं ले रहा. If I keep it this way, for some reason वो p dot के आगे नहीं रहा. परसेंटेज में भी ऐसा ही हो रहा है क्या? Why so? I technically हमें बस 0 को select करना है because it's just a number. So 0 signifies that, and we just have to type in p dot m and okay. It cannot use a number format, then we use another one. These we can't use, these have some different meaning attached to them. ये सब date based है, ये सब हम नहीं use कर सकते हैं. हम अपनी तरफ से थोड़ी ना कोई डाल रहे हैं, हम तो वही यूज कर रहे हैं जो यहाँ पे दिए हुए. Why is it showing an error? इसके आगे नहीं ले रहा. परसेंटेज के आगे we've already used that once. It is not taking against percentage also. It should be done. Raman, आपका हो रहा है ना? So what is the issue coming in? एक ये सेम चीज करिए. रिदम एक्चुअली वो एरर मेरा भी आ रहा था, बट एरर आने के बाद मैं अगेन कस्टम पे किया एंड देन वहां पे मैंने ये जो ऑब्लिक वाला रिवर्स ऑब्लिक वाला साइन है वो मैनुअली ऐड किया है, देन फिर वो इससे पहले ऑब्लिक है, डॉट के बाद ऑब्लिक करके एम है. यस, बट वो रिवर्स ऑब्लिक है, मतलब now it is showing.
नाउ इट इज शोन। पिछली बार उसने ये ऑब्लिक अपने आप ले लिया था ऑटोमेटिकली, इस बार नहीं लिया। एक्चुअली जब हम परसेंटेज में कर देते हैं तो हमें ऑब्लिक डालने की जरूरत नहीं थी, हमने एंटर कर दिया था, उसने ले लिया था। बट हम अगेन मैं उसके फॉर्मूले पे गया तो उसमें पहले से ऑब्लिक दिखा था दे रखा था, परसेंटेज वाले हाँ में भी, तो वही मैं वही। बस रिप्लेस कर दिया, जीरो कर दिया। नाइस। हाँ तो वो ऑटोमेटिकली पिछले केस में उसने क्या किया था, ये अगर आप देखोगे यहाँ पर जाओगे, कंट्रोल वन इज द शॉर्टकट। मैं कहूँ कुछ वन से था, so it wasn't control shift 1. I was trying control shift 1 earlier on. It is just control 1. कंट्रोल 1 से डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाते हो। अगर इसमें कस्टम पे आप जाते हो तो यहाँ पे जब हमने 0% सेलेक्ट करा था और यहाँ पर p.a टाइप किया था, अब अगर हम देख रहे हैं हमने तो p.a टाइप किया था बट ये ऑब्लिक का साइन पहले से दे रहा है। सो आई डोंट नो व्हाई लास्ट टाइम उसने ऑटोमेटिकली दिया ये ऑब्लिक का साइन, पहले ये नहीं आता था ऑब्लिक का साइन। दिस इज समथिंग न्यू। इसमें इसने ऑटोमेटिकली अपने आप दे दिया, बट नेक्स्ट टाइम जब हमने इसके लिए वो चीज ट्राई करी तो वहां पर हमें ये ऑब्लिक का साइन यहाँ पर देना पड़ा। व्हेन वी एडेड दिस ऑब्लिक साइन तो ऑटोमेटिकली p डॉट m उसने ले लिया। सो p डॉट के बाद ऑब्लिक साइन देन m अगर आप टाइप करते हो तो आपका ये वो ले लेगा। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट कस्टम फॉर्मेटिंग। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे 5000 ही दिखेगा इन योर फॉर्मूला बार। दैट मीन्स द वैल्यू इज 5000 only. It is just the part of format. This p.m is just part of the format here. ठीक है, ओके। सो बेसिक फॉर्मेटिंग आई थिंक सबको पता होगी। This was about custom formatting. We will be talking about custom formatting, basic formatting and conditional formatting. ठीक है, तो बेसिक फॉर्मेटिंग की अगर हम बात करें तो दैट कैन बी डेल्ट विद दिस एरिया ऑफ योर होम टैब, ऑल्सो द कंट्रोल वन दैट वी डिड टू जस्ट ओपन द शॉर्टकट फॉर इट। दोनों ही जगह से वो किया जा सकता है। एंड आई थिंक इट इज वेरी सेल्फ एविडेंट कि कोई भी अगर हम सेल यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी अगर हम फिगर डाल रहे हैं कुछ भी डाल रहे हैं, वी मस्ट give it some kind of a format to it, whether it's a currency thing or a time or date or percentage or anything for that matter. So that should definitely be formatted. ठीक है, परसेंटेज ऐड करना है यहाँ से भी कर सकते हो एंड इसका शॉर्टकट भी डिस्प्ले हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। सो इफ यू वांट टू ऐड percentage to this cell, you can just have control shift percentage, it will be added there. ठीक है, तो इस तरीके से you can just format and then lastly if you want to add or subtract, that is increase or decrease the decimal places, that can also be done. This is basic formatting, and of course you can have your presentation set here through these features. I'm sure everybody is familiar with this much basic. ठीक है ना, तो ये तो सब यूज करते ही है, ये तो बहुत बेसिक है, प्रेजेंटेशन के काम आता है हमारे, ये तो हमने यूज करना ही है, राइट। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, नहीं तो वी कैन मूव विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग को लेकर के, कस्टम फॉर्मेटिंग को लेकर के एनी डाउट्स एनीबॉडी? Okay, so now let's talk a little bit about conditional formatting. इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी because इसको यूज करके ज़्यादा मजा आता है। It's something which is less to be talked about and more to be applied.
ठीक है. Conditional formatting, if you open it up, as the very name is suggesting, we can do some formatting on some conditional basis. That is conditional formatting. ठीक है. Now there is option to highlight cells in our data. ठीक है. अगर greater than this number हो, let's say we have some results oriented data and we want to just highlight the people with so many marks or so and so result. ठीक है. So we can do that by using greater than, less than, between, equal to, whatever, and even duplicate values. Like if the values are duplicate, you just highlight them. If they're unique, you just highlight them. So a lot of things can be done with respect to this conditional formatting, and this is basically with respect to your presentation and stuff, and then you can actually define multiple rules of formatting as well. I'll definitely give you some exercise on it, don't worry. I'm just introducing the features which are present there. I'm going to give you some data, maybe today, maybe next class. ठीक है. अभी तो आज हमारे पास और भी बहुत सारे functions है to talk about. So maybe next class I can get some small data for you, wherein you can apply this conditional formatting thing. ठीक है. और else अगर current data में ही अगर कहीं पे opportunity लगेगी कि apply किया जा सकता है, so you can practice it there itself also. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे हम rule identify कर सकते हैं proper कि किस rule से हम formatting करना चाहते हैं या कुछ भी highlighting करना चाहते हैं. Format only cells that contain, or format only top or bottom ranked values, और above average, unique और duplicate. मतलब अगर आप simple यूज करना चाहते हो तो definitely highlight cells में आपको सारे simple मिल जाएंगे जो आप यूज कर सकते हो. बट कुछ complicated अगर create करना चाहते हो तो new rule या manage rules के through भी आप कर सकते हो. So basically you are highlighting your data by specifying some conditions कि अगर वो conditions fulfill होती है तो आप हाईलाइट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे. ठीक है. दैट इज द होल पॉइंट है. गॉट इट. चलो ठीक है. दिस इज वन थिंग. अभी मैं एक काम करती हूँ. आई जस्ट शेयर दिस फाइल विद यू ओवर टेलीग्राम, बिकॉज बाकी सारी जितनी भी हमारी चीजें हैं वो सब डेटा बेस्ड है. ठीक है. सो आई जस्ट शेयर my file with you over Telegram, and then we'll continue. Okay.
Okay, so I have shared the file with you. Excel फाइल भी मैंने शेयर कर दी है एंड दीपांशु आई हैव शेयर्ड द इंडस्ट्री एनालिसिस फाइल आल्सो. वो वाली फाइल भी मैंने थोड़ी देर पहले अराउंड 8:15 शेयर कर दी थी. यू कैन जस्ट चेक इट आउट. सो दोनों फाइल शेयर हो चुकी है एंड just let me know once you've downloaded the file and you're ready to work on it. Okay, great. चलो जी फिर शुरू करते हैं हम. So let's start with this one. This is the sheet containing everything related to sum. ठीक है. Sum is like one function of Excel जो कि आप कितनी बार भी यूज कर सकते हो एंड there is going to be hardly any situation जहाँ पे आपने sum related कोई function यूज नहीं किया. ठीक है. sum का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सम का ऑब्जेक्टिव टोटल करना होता है, राइट? तो यहाँ पर लेट्स सी. सबसे पहले तो हमारे पास किस टाइप का डेटा है. वी हैव सम ऑर्डर डेट्स विद अस. ठीक है. हमारे पास कुछ ऑर्डर डेट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of January 2021 till 21st of December 2021. मतलब पूरे साल का कुछ हमारे पास ऑर्डर डेटा है एंड किस रीजन से वो ऑर्डर आए हैं वो भी हमें प्रोवाइडेड है एंड द पर्सन हु वाज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर, द सेल्स पर्सन, कंसर्न्ड पार्ट ऑफ द टीम, उनके नेम्स प्रोवाइडेड है. ठीक है. एंड क्या आइटम हमने सेल करी है वो भी प्रोवाइडेड है. कितने यूनिट्स हमने सेल किया वो भी प्रोवाइडेड है. किस प्राइस पे हमने सेल किया पर यूनिट वो भी प्रोवाइडेड है. ठीक है. सो दिस इज द प्राइस पर यूनिट एंड these are the number of units at which we have sold the particular item. This is the person who sold, this is the area where it was sold and this is the date when it was sold. ठीक है. So this is kind of a sales data which is provided to us. तो सबसे पहले what we would like to know is the sales amount, the revenue, that is the total. ठीक है. So can we calculate this total? What do we have to do to calculate this total? Yes, we can do it just by multiplying the two things. The number of unit into the sale price करेंगे तो हमारे पास total आ जाएगा, right? So we can simply type is equal to absolutely Shivangi. We'll have the number of units and we'll multiply it with the sales price. ठीक है. Definitely we'll not be typing in anything. We'll be just multiplying the two things. Two cells, enter. And if you don't want these decimal places to bug us, we just remove them and we can drag it downward for the remaining part of the year. So shift and down key to select and then control D to drag the formula downward. ठीक है. Are we getting the same numbers? Okay, cool. So ये हमने अभी multiply कर लिया दोनों चीजों को in order to get the total sales figure with us, right? Now, if I want the total for the whole year, like this is for the specific dates,
if I want to know what is the total sales for the whole year, how can I get that? ठीक है जी. So we can just use the sum function, right? So sum function के लिए what do? We go to the cell where we want to add stuff. We type is equal to sum, bracket open, which can be opened through the tab button also. ठीक है, टैब पे क्लिक करते हो आप तो भी आपका पूरा फंक्शन रेडी हो जाता है, रेडी टू यूज हो जाता है. And then you select all the cells जिनका आपको सम करना है. ठीक है, and this is how a cell range is selected in Excel, G2 till G22, right? And then close the bracket and enter. So are we getting this 1,370 as a figure? बिनो आपने टाइप करना is equal to sum, bracket open, and then you select all the cells जिनका हमें सम करना है. You just select them and bracket close. Enter. Got it, Bino? Okay. So 1,03,000, actually 10,370 is the number. I'm sure it must be in pound or euro or dollar maybe. Otherwise, 10,000 rupees is nothing for a whole year in India at least. Okay. Anyhow, whatever it is, this is our total sales that we are getting, right? If I say that I am not bothered by individual date-wise sales, I just want to know this number directly without two steps. I want to do it in one step. अभी हमने अच्छा हाँ ऑटो सम की मैं वैसे बात नहीं कर रही अभी, लेकिन हाँ एक ऑटो सम भी मैं आपको बता देती हूँ. यस आई एम टॉकिंग अबाउट सम प्रोडक्ट. एब्सोल्युटली शान. देखो ऑटो सम बेसिकली क्या है कि अगर मेरे को यहाँ पर इज इक्वल टू सम नहीं टाइप करना, ये भी बड़े काम आता है. हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, we just select the cell जिनका हमारे को सम करना है along with the cell जहां पर हमें सम करना है, and we can just press alt equal to and अपने आप ही सम हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, so alt equal to is basically alt plus equal to is basically the shortcut to sum. ठीक है, अभी एक काम करते हैं. हाँ, यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने 2 स्टेप्स में ये सारा काम किया. We first multiplied, then we dragged, rather this is the second step. हमने पहले मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप वाज कि हमने इसको आगे ड्रैग किया. थर्ड स्टेप वाज कि हमने इसको आगे सम करा. तो 3 स्टेप्स में हमने ये काम किया. Although this can be accomplished in one single
task as well using sum product. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपको सम प्रोडक्ट करके दिखाती हूँ. आप सिंपली इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट टाइप करोगे. सम प्रोडक्ट जैसे ही आपका ये आ गया, आप सीधा टैब पे क्लिक करते हो तो वो सेलेक्ट कर देता है. आपको पूरा टाइप करने की भी जरूरत नहीं है. अभी जो सम प्रोडक्ट बेसिकली है, इसका फंडा क्या है, ये बेसिकली जो भी आप सेल सेलेक्ट करते हो पहले उनका प्रोडक्ट निकालता है और फिर उस प्रोडक्ट का सम कर देता है. ठीक है, फर्स्ट इट विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट एंड देन डू द सम ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज सम प्रोडक्ट. राइट, तो अभी हमारे बेसिकली क्या करना है, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है. राइट, तो एरे, एरे मतलब क्या होता है, एरे मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स. तो array 1 indicates the first row or column, whatever we are using, first group of cells. Array 2 contains the second group of cells. Array 3 contains the third group of cells, जिनको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और फिर उनके प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट कॉलम. ठीक है, मैंने आपको बताया था शिफ्ट एंड डाउन की से आप इंडिविजुअल सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हो. अगर आप शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन की करते हो तो आप सभी सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर पाओगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा देते हैं और कॉमा देने के बाद वी नीड टू स्पेसिफाई द सेकंड सेट ऑफ सेल्स. So we select this and we control shift and down key. The whole of it is selected at one go till the last cell. ठीक है, and then we just close the bracket. We have given all the command that is required for in this situation. That is, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनका सम करो एंड एंटर. And we get the same figure जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी थी. सेम फिगर हमारे पास आ जाती है but with a different root. So this whole thing could have been accomplished with just one single step, that is something. ठीक है, डन. सो सम एंड सम प्रोडक्ट, ये दोनों चीजें हमने कर ली. अब जो नेक्स्ट चीज हमने करनी है वो क्या है, दैट इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ तो हमने क्या किया था, हमने सम कर दिया. ठीक है, नो कंडीशंस आस्क्ड. अभी अगर हमारे पास कुछ कंडीशंस है जो कि अगर फुलफिल होती है तभी हमारे को सम करना है, नहीं तो हमारे को सम नहीं करना है. ठीक है, दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैव. सो वो चीज हम कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं, we'll discuss that. ठीक है, so we'll do the something but on conditional basis. Like for example, यहाँ पर बहुत सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. अगर हमारे को यहाँ पर एंड्रयूज ने कितनी सेल करी है अगर बताना है, यानी एंड्रयूज की सेल्स आ रही है, यहाँ पर आ रही है
this one, and then we have another one here, and then another one here, and maybe एक आधे बीच में और है. ठीक है, तो जो भी है, how to do all equal to के लिए आपको simply जिनका आपको sum करना है, you have 1, then you have 2, whatever it is, आपके पास कुछ numbers है, आपको इनका sum करना है, तो you just shift and right key से और down key से, whatever the case may be, you just select the numbers जिनका आपको sum करना है, another cell also जहाँ पर sum करना है, and then you press on alt equal to, आपका total आ जाएगा. Okay, solve. ठीक है. So, as I was saying, that there are other ways to do what I'm saying, but we are looking at one way right now, that is to do the sum on conditional basis. ठीक है, तो अब यहाँ पर condition है that the representative has to be Andrews, and we want the total of the sales done by Andrews during 2021 year. ठीक है. So this is the total sales we calculated, and this is again the total sales, but using sum product. ठीक है. अभी यहाँ पर let's have a question to deal with the situation. इससे पहले जो अभी सम प्रोडक्ट किया है एंड उसमें कोई कैलकुलेशन है वो मिस्टेक लाइक रो नंबर 16 पे देखे 17 और ओ सॉरी 7 एंड 1 का हमने किया तो वो 9 है एंड 14 एंड 1 का है तो वो 18 है. वहाँ पे एंड्रयू का जो 19 वाला हम रो पे देखें तो 14 यूनिट है एंड 1 सेल प्राइस है टोटल एंड और भी है ना 7 और 1 का 9 है ऊपर गिल का एंड और भी है कुछ. I think that's that may be because because we have we're not showing any decimal places. So decimal places को भी अगर हम open कर दें and then we calculated decimal places नहीं दिख रहे, I think that is the reason. Yeah, if you multiply 14 with 1.29, you get 18.06. So it's because of the decimal thing. ठीक है, to avoid any confusion, you can open the decimals as well. ठीक है, हर जगह पे आप decimals open कर सकते हो to 2 decimal places. Then I think there will not be any confusion. ठीक है. Okay, so now sum हो गया, sum product हो गया, sum का shortcut हो गया. Now we will be discussing the doing the sum thing, but on conditional basis. ठीक है, like for example, if I want to just know Andrew sales, ठीक है, या फिर I just want to focus upon the sales of some particular date, or I want to focus upon the sales of a particular region or a particular item, or sales which are greater than a certain number of amount, like जो sales का figure $100 से ऊपर का है, सिर्फ मेरे को उनका सम चाहिए, higher value का
सम, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, एनीथिंग मुझे ऐड करना पड़ेगा, बट कंडीशंस अटैच्ड हो गई है, कुछ ना कुछ कंडीशंस यहाँ पर अटैच हो रही है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट सम नहीं कर सकते। हम कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग सम इफ। सो यहाँ पर बेसिकली दो फंक्शंस मैंने लिखे, ठीक है। मैंने पहले तो मैं बेसिक लेवल पे फंक्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ, and then we'll have multiple questions, multiple scenarios under which we will try to apply these functions and then get our answers, ठीक है। तो दो फंक्शंस के बारे में हमने यहाँ पर बात करनी है, सम इफ एंड सम इफ्स। एनी गेसेस दोनों में क्या फर्क हो सकता है? एनी गेसेस? यस, सम इफ हम यूज करते हैं फॉर वन कंडीशन, यानी अगर सिंगल कंडीशन ही अप्लाई हो रही है तो वी यूज सम इफ, एंड अगर मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई हो रही है, ठीक है, सम इफ्स यूज करा जाता है। अब एक चीज है कि सम इफ्स हमारा सिंगल कंडीशन में भी यूज करा जा सकता है और मल्टीपल में भी करा जा सकता है। तो सम इफ्स हमारा सिंगल एंड मल्टीपल कंडीशंस में यूज हो जाता है, सम इफ सिर्फ सिंगल कंडीशन में यूज होता है, ठीक है। we'll be using both। अभी एक सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, एक सिचुएशन हम ऐसी लेते हैं that I want to know the total sales above $100, ठीक है। हमें क्या चाहिए? taking place in the year 2021। This is the situation, right? This is the first question that we are going to be dealing with। So we want to know the total sales which are above $100 taking place in the year 2021, ठीक है। सो बहुत सारी नंबर्स होंगे जो $100 के अबव की सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यहाँ पे कुछ है जो $100 से बिलो भी है, कुछ है जो $100 के अबव भी है, ठीक है। हमें सिर्फ जो $100 के ऊपर के नंबर्स है उनको ऐड करना है। तो एक ही कंडीशन है, सम इफ से भी हो सकता है, सम इफ से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी that Excel has multiple functions. You don't need to remember each and every function in depth. You just have to know कि कौन सा function आपके काम आ सकता है, and you just have to know how to read it. Like for example, यहाँ पर मुझे अगर सम इफ या सम इफ्स यूज करना है तो मेरे को इसको रीड करना आना चाहिए। अब यहाँ पर लेट्स से हम इसका आंसर यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन, एंड देन एक ही कंडीशन है, सम इफ से भी हो सकता है। हम सम इफ पे जाते हैं, टैब पे क्लिक करते हैं, इट गेट्स सेलेक्टेड एंड इट हैज 3 इनपुट्स। ये जो आप पढ़ रहे हो, दिस इज बेसिकली द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है? मेरे को सबसे पहले रेंज प्रोवाइड करना है, देन क्राइटेरिया, देन सम रेंज। दिस फर्स्ट रेंज विल बी द रेंज ऑन विच द क्राइटेरिया इज गोइंग टू बी अप्लाइड, ठीक है।
पहले मेरे को रेंज स्पेसिफाई करनी है, जिस रेंज पे क्राइटेरिया लगना है, फिर मेरे को अपना क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है, फिर मेरे को अपना सम रेंज स्पेसिफाई करना है, दैट इज द रेंज जिस पे सम होना है. 3 things I require, right? So अब हम क्या करेंगे? रेंज के लिए what should I select? Any suggestions? What should I select? Sales. Absolutely. सेल्स कॉलम पे ही हमारा जो कंडीशन है वो सेल्स कॉलम पे ही लग रही है, और सम भी सेल्स कॉलम का ही होना है. सो आई विल बी सेलेक्टिंग द सेल्स कॉलम. ठीक है, this is my criteria range, comma, my criteria is greater than 100. Would you like to try and complete the rest of the part of the formula? Just try it for once. Let's see. Any luck, anybody? किसी का नहीं हुआ सर, क्या दिक्कत आई? Sum range is also sales total, because we have to do the sum of the sales only, but the sales which are greater than 100 not getting selected. क्राइटेरिया में क्या डाला सबसे पहले? तो okay, so I am doing as you are saying. ठीक है, greater than 100 and then comma देके some range, which is this. So it will definitely get selected. It is selected again, but अभी भी आंसर नहीं आया. आप इसको क्लोज करते हो, ब्रैकेट को एंटर करते हो, वो आंसर नहीं देगा, वो एरर देगा. पता है क्यों एरर दिया? अच्छा ओके, पता है क्यों एरर दिया? एनी गेसेस एनीबॉडी?
ये एरर इसीलिए आया क्योंकि ये बेचारा ना ये ग्रेटर देन 100 को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। इसको इस ग्रेटर देन 100 को अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसी कोई चीज होती है ना, कोई अल्फाबेट्स हो गए, ग्रेटर देन लेस देन वाली चीजें हो गई, ये सब टाइप की चीजों एक्सेल डायरेक्टली नहीं समझता। अगर हाँ यहाँ पे सीधा 100 लिखा होता तो वो समझ लेता, बट क्योंकि ग्रेटर देन 100 है वो नहीं समझेगा। तो यहाँ पर हमें इस चीज को बेसिकली डबल कोट्स में पुट करना पड़ेगा, तब वो समझेगा कि हम ग्रेटर देन 100 की बात कर रहे हैं। एंड देन यू प्रेस, इट विल गिव यू द आंसर। Getting the point? आया आपका आंसर? This is the formula we'll be using here. ठीक है? So we selected the sales range, then double quotes में greater than 100, then we again select the sales range. That's it to get the total. So I hope this is clear. I hope you're getting the same answers. This is one situation in which we used sum if. Now I said that sum ifs can be used in one condition as well as multiple conditions also. So this whole thing can be done with the help of sum ifs also. So would you like to try sum ifs? Completing the same thing, same question, but with the help of sum ifs. Sum ifs try करके देखो. Sum if or sum ifs? ये रहा आपका फॉर्मूला फॉर सम इफ. हेलो मैम. यस. आंसर शो नहीं हो रहा मैम इसमें. समझ शो नहीं हो रहा मतलब क्या है? फॉर्मूला भी सेम लगाया मैम. क्या कह रहे हो? फॉर्मूला भी मैम सेम पुट करा मैंने. फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? एरर दिखा रहा है. एरर मैसेज. एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो. I'll just stop sharing my screen. You share your screen. Let's see क्या आ रहा है. ऐसे तो बताना मुश्किल है. Without seeing I can't tell.
नॉट द होल टोटल मत सेलेक्ट करो. हाँ फिल है इट्स फाइन. कॉमन नहीं कॉमन. आ गया. Find result. मैम हम्म. स्क्रीन में रिमूव कैसे करेंगे? क्या रिमूव करना है? स्क्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए आपको ऊपर ही एक आ रहा होगा स्टॉप शेयरिंग रेड कलर का. ऊपर अगर आप अपने कर्सर को लेके जाते हो तो ऊपर की साइड पे एक स्टॉप शेयरिंग करके एक फ्लैश होगा. उस पर आपको प्रेस करना है, क्लिक करना है. ओके सो सम इफ से हुआ किसी का. सम इफ तो हो गया. सम इफ की बारी है. किसी का हुआ सम इफ. ओके ईशान का हुआ. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी किसी का नहीं हुआ. ओके लेट मी शो टू यू. ये हमने किया है यूजिंग सम इफ. अभी हम सेम चीज करेंगे यूजिंग सम इफ्स. ठीक है. सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज इक्वल टू सम इफ्स. अब सिंटेक्स रीड करो. मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है, एक भी कंडीशन हो सकती है, मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती है. राइट. सो सबसे पहले सम रेंज है, देन क्राइटेरिया रेंज है, देन क्राइटेरिया 1. यानी आप पहले सम रेंज आइडेंटिफाई कर रहे हो. यहाँ पर वहां पर सम इफ में हमने बाद में करी थी. यहाँ पर हम पहले ही सम रेंज आइडेंटिफाई करें, फिर हम क्राइटेरिया रेंज आइडेंटिफाई करें, क्राइटेरिया 1 स्पेसिफाई करें, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 आइडेंटिफाई करें, क्राइटेरिया 2 आइडेंटिफाई करें. इस तरीके से वी आर प्रोसीडिंग. ठीक है. तो सम रेंज आइडेंटिफाई किया, फिर क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 एंड सो ऑन. तो सम रेंज क्या है हमारी? सम रेंज हमारा सेल्स फिगर है. राइट. तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया. इसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज भी वही है. राइट. सो विल बी सेलेक्टिंग इट अगेन and then comma
क्राइटेरिया डबल कोट्स में वी स्पेसिफाइड ग्रेटर देन 100, वी क्लोज द ब्रैकेट क्योंकि एक ही कंडीशन है एंड एंटर, आंसर आ जाता है अपना। ठीक है, सो आई होप दिस इज फाइन। हम सम इफ एंड सम इफ्स दोनों यूज करना हो गया हमारा, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है, जहां पर हम सम इफ यूज करेंगे। अभी देखो एक और सिचुएशन लेते हैं दैट वी वांट टू नो द टोटल सेल्स done by Andrews. Total sales done by Andrews during the year. Try करके देखो. This is the formula for sum ifs. We know. ठीक है, देखो ये सम इफ से होता है कि नहीं होता। Total sales done by Andrews during the year 2021. सम इफ या सम इफ्स कुछ भी यूज कर लो, एक ही कंडीशन है, दोनों यूज करा जा सकता है। देखो होता है कि नहीं होता। Done? Okay, great. ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, वी कैन यूज एनीथिंग। सम इफ अगर यूज करते हैं
So range में क्या आ जाएगा मेरी? What will be part of the range? Sales done by Andrews है. Some range different है, range different है. Yes. This range will contain the criteria range. यहाँ पे criteria लग रहा है. Criteria ये representative column में लग रहा है कि इसमें से we are picking up only Andrews. तो जिस पे criteria लग रहा है, that is this range. Then comma, then we must specify the criteria. Criteria क्या है? Andrews है, ठीक है? तो Andrews कैसे बताया आपने एक्सेल को कि Andrews है ये? क्या टाइप करूँ यहाँ पे? Yes, absolutely. जब हम सेल रेफरेंस दे देते हैं तो एक्सेल इतना समझदार है, वो समझ जाता है कि जो भी C22 में है वो हमारा क्राइटेरिया कहाँ लग रहा है? C2 से C22 रेंज में लग रहा है. क्या क्राइटेरिया लग रहा है? C22 का क्राइटेरिया लग रहा है. वही चीज अगर वो ग्रेटर देन 100 वाली चीज अगर एक सेल में स्पेसिफाइड होती तो हम सेल की रेफरेंस दे सकते थे डबल कोट्स के बिना. अभी यहाँ पर सेल की रेफरेंस अगर नहीं देनी होती तो डबल कोट्स में एंड्रयूज टाइप करना पड़ता. बट since we have it already written in the cell, we'll rather do the cell referencing thing. फिर उसके बाद सम रेंज हम स्पेसिफाई करेंगे. तो सम रेंज क्या है हमारी? व्हाट इज द सम रेंज? What is the sum range? Sales. Sales is our sum range. ठीक है, ये जो टोटल कॉलम है ये हमारी सम रेंज है. इसका हमें सम करना है, बट उसी का है जो C2 वाला जो C कॉलम है उसमें एंड्रयूज की कंडीशन को फुलफिल करे. ब्रैकेट क्लोज एंटर. वी गेट दैट. ठीक है. डन. क्लियर है? हाउ वी यूज सम इफ, हाउ वी यूज सम इफ्स. क्लियर एवरीवन? एक बार यस या नो लिख दो चैट सेक्शन में so that I get to know if you're through with this thing or not. ओके अगर ये हो गया है तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट से एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज बेसिकली a combination of the two. That is, we want multiple conditions at the same time. ठीक है, तो क्या conditions डाले? Let me just think. कंडीशन डालते हैं we want the total sales when units sold
is greater than unit sold हमारे greater than 50 हो and sale price greater than 5 हो, ठीक है। दो कंडीशंस हमने डाल दिया यहाँ पर, टोटल सेल्स ही निकालनी है हमने, बट वी वांट द टोटल ऑफ द सेल्स ओनली फॉर the particular sales wherein the unit sold was greater than 50 and the sale price per unit was greater than 5. Can we try? Multiple conditions है यहाँ पर। ओके ग्रेट, क्या बात है, रमन ने कर भी दिया। 5729.64, ठीक है। बाकी सबका भी देखते हैं। Are we getting the same answer everyone? दो कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल करनी है इस बार। Are we getting the same number 5729.64 everyone? Okay, great. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर sum ifs ही यूज करना पड़ेगा, sum if काम नहीं आएगा। So we'll have sum ifs. Then we need to specify the sum rate. What will be my sum rate? It will be my sales number, right? इसी का sum करना हमने, sales number ले लिया हमने। Then comma criteria range. Criteria, पहला criteria किस पे लग रहा है? पहला criteria लग रहा है units पे, absolutely. So we select the units. Then comma, I need to specify the criteria which is being applied on these units. So that is double quotes में I'll specify that it is greater than 50, right? So the number of units have to be greater than 50. Then comma, I have to specify the criteria range 2. Criteria 2 किस पे लग रहा है? It is on the sale price, right? So I select the sale price. Then comma, what is the criteria being applied? Criteria is double quotes में greater than 5. ठीक है? Bracket close, enter. We get 5729.64. ठीक है? So I hope these functions are fine. ठीक है, तो हमने yes, that was the plan exactly, रमन, कि ये सम कैटेगरी के सब कंप्लीट हो जाए हमारे, तो हम फिर ब्रेक ले लेंगे एंड ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। देन वील फोकस अपॉन दीज टू शीट्स। इफ फंक्शन रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है सब डिस्कस कर लेंगे और वी लुकअप रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है सब डिस्कस कर लेंगे। सो दैट इज व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर टुडे। Lakshmi, this is the formula. This formula is self-evident. You can just have a look at this formula. We have to select the sum range, which is sales.
then criteria range 1, which is the unit sold, and then the criteria which is that the unit sold has to be greater than 100, greater than 50, and then the sale price, and then the criteria, the sale price has to be greater than 5. Okay, Lakshmi? Okay, chalo. Let's have a break 10. ठीक है, 10:30 पे we'll start, and फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं 10:30 पे, हम if function related जितने भी tools and features है Excel के वो cover करेंगे, and साथ ही साथ VLOOKUP and not भी cover करेंगे. So this is what I'm planning to cover today. ठीक है, तो let's have a break right now and we'll continue after the break. Okay.
Alright guys, so I hope everyone is back. Let's resume. ठीक है, तो सम एंड ऑल हो गया. अभी हम चलते हैं अपनी इस शीट पे, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इफ फंक्शन. ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इफ फंक्शन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं. बहुत सारे वेरिएंट्स है इफ फंक्शन के, ठीक है ना, जो हम देखने वाले हैं. सबसे पहले तो इफ फंक्शन यूज कहाँ होता है. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू must be aware of the situations wherein if function serves the best. कब यूज करते हैं हम if function? Anybody? Right. Nesting. And if I have to just simply define कि हम if function कहाँ use करते हैं, so I think wherever we have some conditions involved, if function can be of great help to us. Right? कि conditional basis पे हमें कुछ करना है कि if this thing happens, do this, otherwise do that. इस तरीके से हम बोलते हैं, राइट? तो if फंक्शन बेसिकली हमें हेल्प करता है कि हम अंडर डिफरेंट कंडीशंस क्या करें वो चीज स्पेसिफाई कर सकते हैं. ठीक है, राइट. रिजल्ट ट्रू होती है कंडीशन तो क्या करना है, फॉल्स होती है कंडीशन तो क्या करना है. दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग दिस इफ फंक्शन. ठीक है, अब देखते हैं कि किस टाइप का हमारे पास डेटा दिया हुआ है. लेट्स से वी हैव फ्यू स्टूडेंट्स. ठीक है, और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स हैं ये अपने को प्रोवाइडेड है. हमें क्या करना है, उनको ग्रेड देना है. ग्रेड के लिए बट ऑफ कोर्स हमारे को कुछ क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम कुछ क्राइटेरिया यूज करते हुए उनको ग्रेड्स प्रोवाइड करने होंगे. लेट्स से हमारा क्राइटेरिया है ये. दिस इज आवर क्राइटेरिया. ठीक है, we are saying that if the average marks, देखो एक एक का तो हम अलग अलग ग्रेड प्रोवाइड नहीं कर सकते, टोटल एवरेज जरूर निकाल सकते हैं. तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ग्रेड से पहले एक कॉलम एक रो ऐड कर देते हैं. रो ऐड कर सकते हैं हम, कल हमने देखा था हाउ टू गो अबाउट इट, राइट. तो एक रो ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम एवरेज लिख देंगे. Which percentage table this you can copy paste. कॉपी पेस्ट तो नहीं कर पाओगे बट कॉपी कर लो, अपने पास रख लो. ये बेसिकली हमारा क्राइटेरिया है दैट इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन 60 तो हम ए ग्रेड देंगे. इफ द मार्क्स आर लेस देन 60 बट ग्रेटर देन 50 तो हम बी ग्रेड देंगे. इफ द मार्क्स आर लेस देन 50 but greater than 36 तो हम C grade देंगे. and if the marks are less than 36 तो हम D grade देंगे. This is the criteria that we'll be using on the average marks.
Can we calculate the average of these numbers for every individual student? Which function can I use here? Average function, absolutely. तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज करेंगे, ठीक है, एंड विल सेलेक्ट ऑल द नंबर्स जिनका हमारे को एवरेज करना है टू गेट द एवरेज मार्क्स। ऐसे करके हमें सबके एवरेज मार्क्स निकाल लेने हैं। फॉर सिंप्लिसिटी वील इग्नोर द डेसिमल्स, ठीक है। So these are basically the average marks of these students, and we have this criteria that if the average marks is greater than 60, we provide that person with A grade. If it's less than 60 but greater than 50, we'll provide B grade. If it's less than 50 but greater than 36, we'll provide C grade. If it's less than 36, we'll provide D grade. So we have multiple conditions. एक जो if function होता है, अगर मैं यहाँ पर आपको if function टाइप करके दिखाऊं तो इज इक्वल टू if आप लिखोगे तो वो आपसे सबसे पहले क्या पूछता है, व्हाट इज द लॉजिकल टेस्ट, दैट इज व्हाट इज द कंडीशन। आप लॉजिकल टेस्ट में कंडीशन स्पेसिफाई करते हो और उसके बाद वैल्यू इफ दैट कंडीशन इज ट्रू। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर क्या वैल्यू देना है, एंड वैल्यू इफ दैट कंडीशन इज फॉल्स। अगर वो वैल्यू अगर वो फॉल्स हो जाती है, जो भी हमने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट डाला है, तो क्या देना। सो कंडीशन, ट्रू एंड फॉल्स, तीन चीजें हमारे को स्पेसिफाई करनी होती है एक इफ फंक्शन में, राइट। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, एक नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक ही कंडीशन का to understand if function first, then we'll introduce the multiple conditions into it. ठीक है, let's say that we have years, ठीक है, ये हमारे years है, and we have some profit जिसपे अपने को टैक्स पे करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इट इज -10,000, सेकेंड ईयर में इट इज -1 लाख हो गया, ठीक है, -50,000, थर्ड ईयर में it goes on to +20,000 and then it increases by 30,000 every year, ठीक है। इस तरीके का हमने एक छोटा सा डेटा बनाना है, ठीक है। -1 लाख इज द लॉस फॉर first 10,000, adding 30,000 to it every year, ठीक है। And now we have to apply tax on it, where the tax rate is provided to us as 30%. Tax rate अपना 30% है, उसके हिसाब से अपने पे करते हैं, लॉस पे या प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे पे करते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, that if there is loss in this cell, then no tax to be charged. If there is profit in this cell, then tax of 30% will be charged, right?
तो यहाँ पर हम इफ फंक्शन यूज करके टैक्स की फिगर निकाल सकते हैं, वेरिएंट विल स्पेसिफाई कि अगर लॉस है तो टैक्स नहीं कैलकुलेट करना, अगर प्रॉफिट है तो ही टैक्स कैलकुलेट करना है, राइट? कैन यू गाइस ट्राई यूजिंग द इफ फंक्शन? एक बार ट्राई करना चाहोगे? डन, ग्रेट ईशान, ठीक है। I'll also solve it for everyone. I hope everyone at least tried. देखो ट्राई करना बहुत जरूरी है. Getting the result or not getting is another story, but trying is the main thing, because if we keep trying, there's nothing we can't do. So is equal to if करके we start, and then the logical test is that if this cell is greater than 0, if this cell is greater than 0, then comma we have to multiply this profit with the tax rate we have, right? And I'll freeze the tax rate because it is present only in this cell and I need to drag the formula forward. Okay. So if this cell is greater than 0, then this cell will be multiplied by 30%. Otherwise, the value will be 0. In case the profit is less than 0, that is its loss, then there is going to be no tax, right? And as you can see, there is no tax for the first 2 years when there was loss, and then the tax came out. Okay. So this is an example of basically if function, a single if function used. ऊपर जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल इफ फंक्शंस का है, यानी आप एक इफ फंक्शन स्टार्ट करोगे, फिर दूसरा स्टार्ट करोगे, फिर थर्ड स्टार्ट करोगे, until and unless all the conditions specified in this grade criteria are satisfied. ठीक है? So अगर if function clear है, multiple if function use करने पड़ेंगे, ये clear है, तो definitely I would like you to give 1 or 2 minutes, try to calculate this grade that we intend to calculate. Okay. So ये वाला हो गया आपका टैक्स वाला क्वेश्चन, तो ये ग्रेड वाला सॉल्व करने का ट्राई करो.
करा ट्राई आपने? एनी प्रोग्रेस एनीबॉडी? This is the tax calculation formula. Really good progress. Okay, it's clear, no problem. Let me do it. And then I hope everyone tried at least. ठीक है, तो मैं करती हूँ solve and then you can see कि कहाँ पर mistake हो रही थी. Okay, so we'll start with if. So the first criteria is that if this is greater than 60, this is my logical test. That if this average cell is greater than 60, comma, I need to provide with the value. What is the value? If average greater than 60, the value is A, right? So in double quotes, I will be providing A, right? Because हमने देखा था कि एक्सेल ये अगर उसको डायरेक्ट वो डबल कोट्स के थ्रू ही अंडरस्टैंड करता है, डायरेक्टली नहीं कर पाएगा. डायरेक्टली सेल्फ रेफरेंस को समझ जाएगा, पर टाइप करना है तो हमें डबल कोट्स के साथ टाइप करना पड़ेगा. अब हमें क्या बताना है? वैल्यू इफ फॉल्स. अब ये वैल्यू इफ फॉल्स also has multiple conditions. If the average is less than 60, also we have multiple conditions, right? So we have to start with another if function here. We start with and we specify that if the average is 50, this average score is greater than 50, then which we have to provide with the B grade. So double quotes में हम लिखते हैं, then comma,
अभी वैल्यू इफ फॉल्स बताना है. Again, we know that this is not the last condition. We have two more to go. That is, if अच्छा greater than 60 हो गया है, greater than 50 हो गया है, अभी हमें greater than 36 की कंडीशन में C ग्रेड देना है और less than 36 में D ग्रेड देना है. दो कंडीशन अभी भी रहती है, ठीक है. सो इसीलिए हमारे को एक और फंक्शन की नीड है. So we start with another function and the logical test with this cell value is greater than 36. ठीक है. If this cell value is greater than 36, कॉमा हमें कौन सा ग्रेड प्रोवाइड करना है? We need to provide C ग्रेड. तो डबल कोट्स में हमने C स्पेसिफाई कर दिया, फिर कॉमा देंगे. एंड अब हमारे पास लास्ट कंडीशन रह गई है दैट इफ इट इज लेस देन 36. सो जो भी लास्ट कंडीशन रहता है, for that we don't need another if function. We need another function as long as we have minimum conditions left, right? So here we do not require any new if function, because if it is greater than 60 we are providing A grade, if it is greater than 50 we are providing B grade, if it is greater than 36 we are providing C grade. So by default we are just with one situation, that is this must be less than 36. So we can simply type in that thing, that value if false is D. ठीक है. So अगर ABC नहीं है तो D बचता है. Then the value will be the average value will be less than 36. हमने स्पेसिफाई कर दिया, ब्रैकेट कर दिया क्लोज. अब जितने ब्रैकेट ओपन करे हैं उतने ही क्लोज करने पड़ेंगे. दिस इज वन इफ फंक्शन क्लोज, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड. तीन इफ फंक्शंस ओपन किए थे, तीन इफ फंक्शंस क्लोज भी हो गए. एंड एंटर टू गेट द ग्रेड एंड देन यू कैन ड्रैग इट फॉरवर्ड फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है जी. So done with this part, everyone? Okay. For complicated situations, we have other things as well, which we'll be covering later on. But for the current situation, this is the best solution. So now what we will be doing is, this is basically one situation that we have dealt with here, right? अभी देखो, अगर हमारे को opposite चलना है, that is we have to start with less than 3. We have to start with 36. Can we do that quickly using a function? Same grades will be there. It is just that we'll be approaching the question from behind. That is, we'll be starting with, if the
average is less than 36, we provide D. If it is less than 50, we provide C. If it is less than 60, we provide D. And if it, otherwise, we provide E. So can we do it quickly? The less than type. You have to start like the way we started with greater than 60. You need to start your if function with less than 60. Sorry, less than 36. Done? I'll do it quickly for you. Is equal to if kara, the logical test will become if this average number is less than 36, comma, we provide with D grade, comma, again if this cell has a value less than 50, comma, we provide with C grade, फिर से comma, and then again if function, if this cell has a value of less than 60, comma, double quotes में we provide B grade, and then again comma for A grade. 3 brackets closed and enter. You will get the same figure. It's just that we approach from the less than side. अभी नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, ठीक है? This is basically referred to as nested if. जहाँ पर मल्टीपल को साथ में यूज करते हैं, उससे हो जाता है. We covered the simple and nested if. Now we'll be focusing upon a few more things related to if function itself. देखो कई बार क्या होता है कि हम कुछ कैलकुलेशन ऐसे कर रहे होते हैं जहाँ पर कुछ एरर की पॉसिबिलिटी होती है. हमारे पास कुछ अर्निंग्स है and we have the number of shares and we want to calculate EPS. ठीक है, हमारे पास अर्निंग्स है, number of share है, and we want to calculate EPS, that is earnings per share. So earnings per share is divided by the number of shares. So what do we do here? We first need the earnings part. So let's say the earnings are any random
1 2 3 4 5 6 whatever, ठीक है. But the company did not have any shares issued for the first 2 years, let's say. उनके पास कुछ शेयर्स नहीं थे, उसके बाद उन्होंने कुछ शेयर्स इशू करने शुरू करे. Shares with the number of shares. ठीक है. So you can also copy this part and you have to calculate EPS. कर सकते हैं हम EPS calculate? We just have these earnings and we have these numbers of shares. ठीक है बिनो, कुछ भी नहीं है. 1 2 3 4 करके मैंने earnings लिख दिया है. Number of shares फर्स्ट ईयर इसमें 0 और उसके बाद 1 2 3 4 करके मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया. बस मैंने इतना डेटा लिखा है अभी और मेरे को earnings per share चाहिए. That is earnings divided by number of shares. Can we calculate the earnings per share, everyone? Okay. So have you calculated the earnings per share? Yes, absolutely. यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें earnings divided by number of shares, अगर हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला पुट करें तो हमारे पास एरर आ रहा है for the first 2 years and then we are getting the answer, right? तो कई बार ऐसा होता है. This is one random example that कई बार होता है that is जो बहुत लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं. Those projects are for 20 years, 25 years. So we are actually preparing a financial model for 20 years, 25 years or something like that. And in such a long period of time, we cannot track each and every number which is happening. And we have some comprehensive formula. हम एक एक ईयर के लिए सेपरेट फॉर्मूला नहीं फिल कर सकते. We'll be putting in one formula and dragging it forward. That is what we do. ठीक है? Put the formula in the first year and drag it forward for the remaining 20 years, 25 years. Right? Now, sometimes in the middle or at the end or in the beginning or anywhere in the data, situation is such कि जो हमने एक comprehensive एक single formula put करा है first year में, वो किसी ईयर में जाके कुछ एरर दे रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर स्पेसिफिक टू दैट ईयर. तो वहां पर वी डोंट वांट सच अनटाइडी वर्क कि हमारे फाइनेंशियल मॉडल में ऐसे एरर्स शो हो रहे हो बीच बीच में. डू वी वांट दैट? नॉट एट ऑल, राइट? सो फॉर दैट, in order to not to have those errors, year specific errors, yet have a comprehensive formula in year 1 itself, which can be dragged to as many years as we have, we can use if error function to accommodate this situation. ठीक है? How? Let's see. So यहाँ पर मेरे को अगर if error से ये सारा काम करना है, so I'll type is equal to if error. ठीक है? If है, if error है, if NA है. NA क्या होता है? नॉट एप्लीकेबल का एरर होता है. तो सारे एरर्स एक साथ यहाँ पे इफ एरर में डील हो जाते हैं. और इफ NA एक बेसिकली नया ही आया है. पहले सिर्फ इफ एरर ही था जिसमें NA भी नॉट एप्लीकेबल आ सकता है तो हम इफ NA भी यूज कर सकते हैं. बट अगर हमारे को एक जेनरिक सा एक कमांड है कि कोई भी टाइप का, तो हम इफ सिचुएशन यूज इफ एरर करके
हमें दो चीजें स्पेसिफाई करनी है, वैल्यू क्या है एंड व्हाट विल बी द वैल्यू देयर इज। ठीक है, तो वैल्यू हमारी क्या हमारी है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। दिस इज आवर वैल्यू व्हिच वी वांट टू कैलकुलेट, बट comma just in case there is any error in any years you can specify anything। ठीक है, यहाँ पे 0 डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, या फिर अगर आप कुछ स्पेसिफिक लिखना चाहते हो यहाँ पे तो वो डबल कोट्स में लिख भी सकते हो। अगर सिर्फ ब्लैंक छोड़ना चाहते हो तो भी वो पॉसिबल है, आप सिंपली डबल कोट्स ओपन करके क्लोज कर दो। So that would mean that we have to leave this cell blank. If there is error, this cell will be left blank. If there is no error, then we'll divide the earnings by the number of shares. Simple. तो मैं यहाँ पर blank वाला कमांड दे रही हूँ क्योंकि 0 0 तो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि you can observe that when I drag this formula, first 2 years में कुछ भी शो नहीं करा, वो EPS उसने शो ही नहीं करा। That is it left blank because there was some error, and if there is error we have given a command that in case of any error we need to leave the cell blank। अगर यहाँ पर मैं 0 डाल दूंगी तो वो 0 दिखाएगा, यहाँ पे 0 डाल दो it will show 0। ठीक है, done everyone। So this is if error, so we did the simple if, we did the nested if, and we are through with the if error also। Now we'll be moving forward with another situation wherein if function is of a lot of use। There can be multiple ways, definitely there can be। अभी देखो नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में बेसिकली व्हाट विल डू, हम एक काम करने वाले हैं कि ऊपर से जो हमारे पास इतना डेटा है, दैट इज फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स का डेटा जो स्टूडेंट्स का है उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, राइट। हम ऊपर से इतना डेटा कॉपी कर लेंगे फॉर आवर नेक्स्ट थिंग। ठीक है, and now I have some beautiful conditions for you to take care of, just the way we had the conditions। यहाँ जो कंडीशंस हमने देखी थी बिल्कुल कुछ वैसी कंडीशंस यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस एट द सेम टाइम। कंडीशन क्या है हमारे पास, वी हैव बीन प्रोवाइडेड दैट इफ the student is scoring above 70 in both maths and English, we provide the student with A grade। If both are getting if the student is getting less than 40 in both the subjects, we are giving B grade। If the student is getting at least greater than 70 in at least one subject out of the 2, we are providing the person with B grade, and if the student is getting less than 70 in both the subjects, we are providing with C grade। ठीक है, तो दोनों में अगर 70 above रहता है तो A ग्रेड, 40 बिलो रहता है तो D, किसी एक में भी 70 प्लस आ जाता है तो B, दोनों में 70 बिलो है बट ऑफ कोर्स 40 अबव है, क्योंकि 40 बिलो में तो D है, तो दोनों में अगर
70 बिलो है बट 40 अबव है, तो हम उसको सी ग्रेड दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस टाइम वी हैव मल्टीपल कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड एट द सेम टाइम। दोनों सब्जेक्ट्स पे कंडीशन लगेगी तो ए ग्रेड मिलेगा, बी ग्रेड मिलेगा, सी ग्रेड मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। एंड हम इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट पे ग्रेड्स दे रहे हैं दिस टाइम टू ऑल दीज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे ग्रेड प्रोवाइड किए थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम ग्रेड प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट। So can you guys try this one? This one is the last aspect of if। उसके बाद सभी चीजें जो भी फंक्शन में पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सब हमारी कवर हो जाएगी इसके बाद। So please do the honors. Try to get the grades when there are multiple conditions to be fulfilled at the same time. Try करो।
Any progress, anybody? No progress? Shall I solve it for you? Which functions are you using, Raman? Yes. So ये यहाँ पर देखो, आई एम नॉट टू श्योर कि कितने लोग कर पाए नहीं कर पाए, बट यहाँ पर जब मल्टीपल कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड एट द वेरी सेम टाइम, ठीक है, तो हमें दो फंक्शंस की नीड होती है. एक है हमारा फंक्शन एंड. अगर आप इज इक्वल टू एंड करते हो तो वो आपसे क्या पूछता है, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3 एंड सो. मतलब जब हमारे पास मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट है, अगर हम एक इफ फंक्शन को देखें, यहाँ पर जब हमने एक इफ फंक्शन लगाया था तो वहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही लॉजिकल टेस्ट देने का स्पेस था. बट अगर हमारे पास मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट हो जाते हैं तो हम एंड की जरूरत पड़ती है. एंड हम यूज करते हैं जब multiple logical tests have to be satisfied, तब and use करते हैं. multiple logical tests में से if one is satisfied, तब भी अगर हमारे को ओके है तो हम और यूज करते हैं. ठीक है, जैसे let's try here. इज इक्वल टू इफ से स्टार्ट होगा. इट इज जस्ट कि जहां पर लॉजिकल टेस्ट लिखा है इफ फंक्शन में, वहां पर हम लॉजिकल टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए विल बी यूजिंग एंड या फिर और. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी कंडीशन है कि दोनों ही 70 अबव होने चाहिए. तो दोनों 70 अबव होने चाहिए. दोनों में से एक 70 अबव ऐसी कंडीशन नहीं है, दोनों 70 अबव है. तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे को एंड यूज करना पड़ेगा to identify the logicals. So my first logical is that maths marks have to be greater than 70, comma English marks also have to be greater than 70. यहाँ पर मैंने दोनों कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई करवा दी. अब मैं अपना ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी. Why? Because मेरा एंड फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. एंड फंक्शन का सिर्फ उतना ही रोल है जितना लॉजिकल टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए है. उसके बियॉन्ड इट इज जस्ट द इफ फंक्शन बीइंग कंटिन्यूड. ठीक है, अगर ये दोनों में ग्रेटर देन 70 होता है तो कॉमा व्हाट इज गोइंग टू बी माय वैल्यू इफ बोथ आर अबव 70. द ग्रेड विल बी A grade. Okay, Raman, that's great. So हम यहाँ पर A grade देना चाह रहे हैं. So we just provide A grade in double quotes. ठीक है, इसके बाद we'll give another comma. But since we have multiple conditions left, so we need another if function here. Nested if use होगा. फिर से we need to specify the logical. Logical, next logical is
that both have to be less than 40 to get D grade, right? So यहाँ पर हमें फिर and की need हो जाएगी just to specify these two logicals together. So and open किया और उसमें हम specify करेंगे that the maths marks are less than 40 and then comma English marks are also less than 40. दोनों को हम less than 40 specify कर देंगे and the bracket will be closed. With this bracket getting closed, the AND function, the second AND function we used is also closed because that was the purpose. Just to identify that both the marks have to be less than 40. सिर्फ इस काम के लिए हमने ये AND function induce किया था. फिर हम comma देंगे and if both marks are less than 40, then we are supposed to give D grade. So double quotes में we'll be providing with D grade. ठीक है, so डबल कोट्स में हम डी ग्रेड देंगे, फिर हम कॉमा करेंगे एंड देन हमें क्या करना है, देन दोनों में से एक में भी अगर 70 अबव है तो बी ग्रेड देना है. तो दोनों साथ में 70 अबव नहीं होने चाहिए, दोनों में से एक 70 अबव होना चाहिए. तो व्हाट शुड आई यूज, एंड या और. और यूज करेंगे यहाँ पे. सो इफ फंक्शन पहले तो स्टार्ट करेंगे और इफ फंक्शन में we'll be using or function just to specify these two conditions. तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे that this cell is greater than 70 और this cell is greater than 70. दोनों में से अगर एक greater than 70 होता है, bracket will be closed to close the or function. अगर दोनों में से एक में भी 70 above होता है तो which grade do we have to provide? We have to provide B grade. So comma देके डबल कोट्स में हमने B grade specify कर दिया and then comma देके लास्ट हमारे पास क्या बच जाता है, लास्ट हमारे पास एक ही चीज बचती है, वो है C grade. सो हम उसको लास्ट में डबल कोट्स में डाल सकते हैं एंड फिर उसके बाद जितने हमने ब्रैकेट ओपन किए, ब्रैकेट हमने 3 ही ओपन करे हैं, ठीक है. सो 3 फंक्शंस वी यूज्ड जैसे कि पहले भी यूज करे थे. इट इज जस्ट कि लॉजिकल टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीडेड द हेल्प ऑफ एंड और फंक्शन. ठीक है, विद दिस क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर and we can drag it forward to get all our grades. I'm showing the formula once again. Just read the formula, just try to apply it once, and then also if it's not clear, then let me know, I'll explain it again. एक बार खुद को टाइम दो फॉर्मूला के साथ.
Done, everyone? Okay. So, and or if, nested if error, if any, everything related to if is done. Okay, sum if and everything is also done. So if conditional basis पे कुछ भी करना है आपको, so you are very quick now, right? So now we can move forward with our okay result. You know आपका formula once again. And once you're through with this thing, we'll move forward with our last sheet for today, which is on VLOOKUP, HLOOKUP, match and index. वहाँ पर हमने 4 फंक्शन से रिलेटेड डिस्कशन करनी है, ठीक है? Okay. So I hope यहाँ तक सब clear है. Any doubt so far? Anybody? Okay. So now we move forward with the VLOOKUP sheet. So anybody, what is the purpose for which we use VLOOKUP? VLOOKUP हम क्यों use करते हैं? Anybody? Yes. To find or search for something out of the whole set of data that we have. ठीक है, vertical review करने के लिए. Yes. So VLOOKUP stands for vertical lookup. That is to look up for some value vertically, and when the data is in column-wise format. And we have HLOOKUP. We have VLOOKUP for the data which is column-wise, and we have HLOOKUP for data which is row-wise. ठीक है, जहाँ पर जो headings and all है वो row-wise है, horizontally है. वहाँ पर अगर हमारे को अपने हिसाब से data fetch करना है as per a certain requirement, we can use HLOOKUP for that, right? Match index के बारे में बाद में बात करेंगे. पहले अभी let's start with VLOOKUP. That is, we want to look for some value wherein the data is vertically arranged, that is column wise, just like this data. यहाँ पर क्या है? Some sales data again is there. We have provided the segment, particular segment जहाँ पर sale हुई है, country जहाँ पर sale हुई है, city जहाँ पर हुई है, state, then postal code, region, product ID, category, subcategory, product name, sales figure, the quantity sold, the discount that we offered, and the profit that we have fetched from that particular sale. ये सारी information हमें provided है. ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इस information को use करेंगे for our whenever we are looking for something specific out of this whole lot of data. So data can be huge, right? And this is just small part of it. And VLOOKUP, HLOOKUP, and the like helps us to get to the information directly without wasting our time into the non-required field for data. Okay. So जैसे कि for example, let's take an example to use the VLOOKUP thing. Let's say that I type in here
I enter specific category, maybe I type in a specific category of product. Okay, we have various categories of products. The subcategories are there. ठीक है, कुछ भी हम यहाँ पे टाइप करें, हम कैटेगरी टाइप करें या प्रोडक्ट आईडी टाइप कर रहे हैं, हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट क्या सेल्स रही वो हमारे पास आ जाए. That is what we are trying to find here. ठीक है, तो let's start with category. So we enter category here to get the respective sales number. ठीक है, and the profit number. ठीक है, मतलब हमें जो भी specific information चाहिए होगी, let's say we are looking for the technology category or office supplies or furniture, कुछ भी हम यहाँ पर type करें and the respective sales and profit number we are able to fetch. ठीक है, that is the objective. So I'll just make it more presentable and okay, so we enter the category here to get the sales and profit number with us. Okay, that is first thing that we'll be doing, right? So let's say I want to know furniture. ठीक है, furniture के respect पे we are looking for the sales and the profit number कि furniture यहाँ पे type किया उससे related जो भी, but यहाँ पर एक चीज है कि we have multiple furnitures, right? जिनकी multiple sales है. Anyhow, एक काम करते हैं, let's tweak the question a little. Category की जगह पर let's have a look at something which is unique, right? जो कुछ unique है जिसके basis पे कुछ उसके specific कुछ unique sales and profit number can be found. So what unique I can see is that the product names are all unique, right? Product names सब unique लग रहे हैं and the product ID also seems to be unique, right? So product ID सब यूनिक लग रहे हैं. एक काम करते हैं, यहाँ पर हम प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंगली करते हैं टू स्टार्ट ऑफ. प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर हम स्पेसिफाई करें और उस प्रोडक्ट आईडी से स्पेसिफिक जो भी सेल्स है, जो भी प्रॉफिट है, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाए. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सो प्रोडक्ट आईडी लेट्स से मैं इक्वल टू करके आई एम गोइंग टू गिव द रेफरेंस ऑफ द सेल जो आईडी मेरे को चाहिए. ठीक है, लेट्स से दिस इज द आईडी वी आर रेफरिंग टू. ठीक है, दिस इज आवर आईडी PECPH 10002275. And just imagine that there is so much amount of data here. अभी तो just for simplicity purpose I have just taken 20 entries, but in practical world there are more than 200 to 2000 entries as well in such kind of data, right? So यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक प्रोडक्ट आईडी डाला है, उस आईडी के अगेंस्ट सेल्स कितनी है मेरे को वो चाहिए यहाँ पर. ठीक है, सो व्हाट कैन आई डू? I can use VLOOKUP here, right? So I'll be typing in is equal to VLOOKUP is equal to VLOOKUP करके again the syntax will start running. ठीक है, सबसे पहले it is asking for the lookup value. Now what is the lookup value? Lookup value is the value on the basis of which we are looking for something.
So we are looking for something on the basis of this product ID. ठीक है? So we'll select this cell जहाँ पर हमारा product ID specified है. Then we specify comma. Then we need to specify the table array, that is कि कहाँ पर, where do we want to look up for this value. So we want to look up for this value in this table. Now it is highly advisable कि जो हम लोग basically जो भी हमारा lookup value हो वहीं से हमारा ये टेबल एरे स्टार्ट हो. उससे पहले का डेटा हमारे लिए यूजलेस है. ठीक है? सो प्रोडक्ट आईडी से हम स्टार्ट करते हैं. वी स्टार्टेड विद दिस थिंग and we selected the whole table starting from product ID till the last column which is profit. ठीक है? So हमने सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया. दैट इज आवर लुकअप, सॉरी टेबल एरे. देन कॉमा. फिर वो हमसे क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर. कॉलम इंडेक्स नंबर दैट इज इस पूरे टेबल में से विच कॉलम आर यू लुकिंग फॉर योर आंसर. So we are looking for the sales number, right? We are looking for the sales number. So sales is which column? 1, 2, 3, 4, 5. In this selected table, what is the position of this sales column? 1, 2, 3, 4, 5. So we'll have 5 written here for our column index number. Then comma. We need to specify whether we are looking for an approximate match or a true match. See, we are 90% of the scenarios we are looking for the exact match. That is exactly जो ये product ID हमने type किया उसके against जो भी sales column में figure आ रही है, that should be our answer. ठीक है? Unless and until we are into a situation जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा approximations चलती है, decimals में answers है, and exact match करना मुश्किल है, तो वहाँ पर हम approximate match कर देते हैं. लेकिन otherwise in situations like the current, we are very comfortable using the exact match, for which we will have to type here false. ठीक है? false टाइप करेंगे या फिर इसको सेलेक्ट कर देंगे तो भी हो जाएगा डबल क्लिक करके. And with this our formula is complete. We just close the bracket and we enter to get our sales. I'll show it again. So this is the formula I have put. And you can see the answer we got, 907, is actually the correct answer as well. इसके अगेंस्ट अपने को सेल्स चाहिए था, सेल्स नंबर आ गया, right? So this is the formula. Showing it again. ठीक है?
Done, everyone? Okay. So once we have this sales number with us, the next thing I would like you to do is to find out the profit, but to find it out on the basis of sales, like we did get the sales number based upon the product ID. Now we'll be getting the profit number, but not on the basis of product ID, but on the basis of sales. Getting the point? सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट यहाँ पर आपने निकालना. कैन यू डू इट? कैन यू ट्राई? Yes, Ron. So what are we going to do? We'll type in is equal to VLOOKUP. The lookup value this time is going to be sales number. Then comma. The table array will start from sales. ठीक है, सेल्स से ही हमारा ये टेबल एरे स्टार्ट हो जाएगा. सेलेक्ट द होल थिंग, देन कॉमा, column index number. So column index number in this selected table is going to be 1, 2, 3, 4. We are looking for the fourth column. So we'll type in 4 here and then comma, false for the exact match, bracket close and enter to get the respective profit figure as well. ठीक है? This is the formula below. We use the VLOOKUP formula for the lookup value. We use sales and then we select the table from sales to profit and then we type 4 for the column we want the answer to be, that is profit being our fourth column, and then lastly we type false for the exact match thing, and that's it. Done? Clear है तीनों? Okay. So I think VLOOKUP is clear. VLOOKUP use कैसे करते हैं? ठीक है? अभी एक different situation लेके देखते हैं. अच्छा, I think we have less time for that different situation. उसकी जगह पर एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी. Another function apart from VLOOKUP. यहाँ पर अब देखो हमने यहाँ पर 5 टाइप किया था. Right, we typed 5 and here we type 4. But what if there are hundreds of columns there? Will we be calculating, like counting 1, 2, 3, 4? Which column are we talking about? There is some bivariant to it which we can use, and that is a very interesting function. Let's cover this function, match. This will be the last function for today. ठीक है? मैच फंक्शन करेंगे. मैच फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैच फंक्शन matches a particular thing in the whole data
and उस particular thing की क्या position है in the whole data, it tells us that. ठीक है, so match function matches a particular item in the data and tells the position of that item in the data. ठीक है, let's say in this example we started with this product ID thing going till the sales. ठीक है, so we want to know कि ये सेल्स की क्या पोजीशन है. ठीक है, यहाँ पर हम अच्छा सेल्स तक नहीं गए थे, हम एंड तक गए थे. तो अगर इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमें बिना काउंट करे बताना है that what is the position of this column sales column, तो हम वो काम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, उसके लिए हम मैच यूज कर सकते हैं. हाउ, लेट्स सी. सो आई ओपन दिस फंक्शन इज इक्वल टू मैच. ठीक है, इज इक्वल टू मैच के बाद I need to specify my lookup value. Now the lookup value stands for the value which I'm looking for. I am looking for the position of sales. Okay, I'm looking for the position of this column named sales. So I select this as my lookup value, comma. Second thing I need to specify is the lookup array. कि इसकी position आप ढूंढ कहाँ रहे हैं. So I am looking for this position in this whole columns, in these whole columns. That is, जो भी मेरी headings है starting from product ID till profit, उसके अंदर sales की क्या position है, I want to know that. So I took everything starting from, I took every heading starting from product ID till profits, and then comma. I need to specify the match type. Match type is basically again the similar thing that we had in VLOOKUP कि match type हम कैसा करना चाहते हैं. It's going to be less than exact or greater than match. तो ये less than greater than makes sense जब कुछ number specific है. But when we are looking for the position of sales among all the headings, we are definitely going to use exact match there. So we type in 0 for the exact match and then bracket close and enter. So the 5 column जो हमने यहाँ पर खुद count करके type किया था, that 5 exact number we are getting as our answer here using the match function. ठीक है, हुआ मैच फंक्शन. अभी अगर इस मैच फंक्शन को हमें इंड्यूस करना है, कंबाइन करना है, रिप्लेस करना है इस 5 को विद दिस मैच फंक्शन, तो हम कैसे कर सकते हैं. We'll just erase this 5 and we'll start typing in match, right? And then we select the sales and then comma, the whole of it, all the headings, then comma, 0 for exact match and bracket close. So the exact thing which we typed in another cell, we are typing that exact
exact same thing without the equal to sign. Within this VLOOKUP formula, we are combining the two things, VLOOKUP and match. Okay. And that's it. We are going to get the same answer. It's just that instead of typing in 5, we have this match function replacing it. So that we don't have to count the column number or row number every time we want to do some calculations. Okay. VLOOKUP and match. Both of them are clear. Anybody, any doubts? Clear, everyone? So what all we covered today, if we summarize it, we actually covered this custom formatting, simple formatting, conditional formatting. We talked about, we did this cell referencing and freezing exercise. Then we went on to cover everything related to the sum product, sum ifs. And then we covered if related all the functions, possible functions. And then we went on to this VLOOKUP and match. अभी इसमें इंडेक्स और एच लुकअप ये दोनों चीजें अभी डिस्कस नहीं हुई है, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी, ठीक है. बट VLOOKUP एंड मैच हो चुका है, राइट. सो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद एक्सेल ओनली, एंड आई थिंक सैटरडे की क्लास में हम होपफुली वाइंड अप कर देंगे शायद एक्सेल, ताकि संडे से वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. अभी तक किसी को कोई डाउट है, एनीथिंग, एनी कंसर्न, एनीबॉडी? नो डाउट, नथिंग. Do you guys need this file? Do you want me to share it over Telegram? Okay, so I'll share this file with you. Just remember, I'm sharing multiple times. I'm sharing the same file multiple times, but फाइनल फाइल फाइनल होती है, उसको अपने हिसाब से आप मार्क कर लेना, ठीक है. क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस वाली फाइल्स है सारी, अभी इसमें और भी चीजें ऐड होती रहेगी एज वी प्रोग्रेस. Nevertheless, for now, whatever we have covered, I'll share the file over Telegram, and do try to find some time during the week. I think on Sunday we'll be starting with financial modeling, if not Saturday. सैटरडे को मोस्ट लाइकली हम अपना एक्सेल रिलेटेड जो भी करना होगा वो वाइंड अप कर लेंगे, एंड संडे वी विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू स्टार्ट विद फाइनेंशियल मॉडल्स. ओके, चलो, try to find some time during the week where you can just practice whatever we discussed during this weekend. Always remember to practice whatever we discussed during the weekend, and next week I'll ask some questions on Excel as well, and then we'll move forward with financial modeling. ठीक है जी, चलो, have a good week ahead. Do take care of yourself and your families. Stay home, stay safe, and see you next weekend. You know, you can just post in the Telegram group itself. I'll answer there only. Thanks everyone. Thanks Shivangi. Thanks everyone, you to take care. Chalo, okay then guys, bye bye. See you next weekend.